हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन योर ओन चैनल दैट इज़ बायोसाइड। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आइदर इन मेल और in female there are two types of reproductive organs. One is known as primary reproductive organs. Now ध्यान देना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम यहाँ पे सब कुछ मेल के बारे में ही बात करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वन इज नोन एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and these are also known as gonads. As you know, these are the organs which produce gamete and these are testes. Okay, now beside this, इनके अलावा there are secondary reproductive organ, or these are also known as accessory reproductive organs, and these are consist of three category. One is known as secondary, or you can say accessory duct. Now these are the duct which does not produce sperm, but it help in the conduction of the sperm, and these include ready testis, vas efferens, epididymis and vas deferens. Now ये क्या कर रहे थे, ये स्पर्म को, गैमीट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. नंबर टू इज सेकेंडरी और यू कैन से एक्सेसरी glands. Now these glands produce some secretion which is very much essential for the maturation, for the proper functioning of sperm, and the example is seminal vesicles which are paired in condition. तो we will write two here. two का मतलब है कि यहाँ पे जो seminal vesicle है वो सिंगल नहीं होते, वो पेयर में होते हैं. सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. थर्ड वन इज ए पेयर ऑफ कॉपर or you can say bulbo-urethral gland. Now अभी हमने पढ़ा कि ये हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं, बट दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्शन एंड द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म. नाउ लास्ट में एक और आता है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एंड दैट इज पीनस. ये है हमारे पास एक पूरा पूरा आउटलाइन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और यू कैन से इन द केस ऑफ मेल वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, दैट इज टेस्टिस. दे आर ऑल्सो नोन एज गोनाड्स. नाउ ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर ऑल्सो नोन एज एक्सेसरी. Now on the other hand, secondary reproductive organs or accessory reproductive organs are those organs which does not produce gamete, but they are very much important for the conduction and the maturation of the sperm. अब ये सब नाम रेडी टेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस है ना, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये हमने एक आउटलाइन पढ़ ली कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या पढ़ना है. तो चलिए आगे शुरू करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज टेस्टिस. नाउ इसके बारे में मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत है. डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई होगी. टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दे आर द गॉनेड्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स. इसके अलावा कुछ एक और हमारे पास पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो टेस्टिस आर पेयर्ड oval structure which are present in extra abdominal cavity
in a loose skin pouch known as scrotum. ठीक है, तो व्हाट इज टेस्टिस? टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, है ना, किसके अंदर? इन ए लूज स्किन पाउच नोन एज स्क्रोटम. डायग्राम में देखते हैं. Now this is scrotum, okay, and in scrotum these are the two oval paired structure known as testis. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द scrotum. Now what is scrotum? Scrotum is a loose skin pouch structure in which testes are present. ये जो scrotum होते हैं ये एक्चुअली में अंदर से दो डिवीजन में डिवाइड होते हैं. That the division which divide the scrotum into the two portion is known as septa. Is known as septa. And now the two divisions are known as scrotal sac. In a scrotal sac, one testis is present. Now there are two scrotal sac in the scrotum, and which is formed due to the septa. ओके, ना ये तो सेप्टा हुआ अंदर से. टेस्टिस जो है वो अंदर से डिवाइड होता है दो पोर्शन में थ्रू ए सेप्टा. बट अगर हम फिजिकली बात करें, विजिबल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो स्क्रोटम होते हैं वो बाहर से एक्सटर्नली डिवाइड दिखते हैं बाय स्टार लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रैफे. विच इज नोन एज रैफे. अब थोड़ा सा स्क्रोटम के बारे में और समझ लेते हैं. जो स्क्रोटम है एक्चुअली में उसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं. देयर आर टू मेन मसल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट. देयर आर टू मसल्स. वन इज नोन एज डार्टोस एंड अदर इज नोन एज क्रीमास्टर. These are two muscles which are found in the scrotum. Now what is the why these muscles are found in the scrotum? चलो बात करते हैं. एक्चुअली में scrotum act as a thermoregulator for testis. जरा यहाँ पे एक बात समझिए. जो टेस्टिस होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है देन द बॉडी टेम्परेचर. देन बॉडी टेम्परेचर. वाई? बिकॉज ये जो टेम्परेचर होता है इट इज मच मोर फेवरेबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अब जरा इसे समझिए आप लोग. तो टेस्टिस एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर टू मेंटेन ए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्पर्मेटोजेनेसिस. अब थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ. एक्चुअली में इन विंटर्स द scrotum become thick in order to prevent the excess loss of heat energy. But in the case of summers, the skin of scrotum become thin in order to pass the excess heat in the environment. यहाँ पे दोनों का मिला के काम एक ही है. क्या में काम है? टू मेंटेन द टेम्परेचर विच इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द ह्यूमन बॉडी. अब ये तो बात हो रही है हमारे पास स्क्रोटम की. यहाँ पे एक दो बात और समझ लेते हैं. इन बिटवीन द स्क्रोटम एंड द टेस्टिस देयर इज प्रेजेंट ए फ्लूइड विच इज नोन एज हाइड्रोसील. And the cavity is known as vaginalis coelom. Why it is known as vaginalis coelom हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे जब हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे. अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल स्क्रोटम के बारे में. चलिए एक और बात मैं आपको समझा दूँ. इन ईच स्क्रोटल sac the testis is joined to the scrotal by a muscles fiber which is known as most important point for NEET, gubernaculum.
ना ये तो हमारे पास बात हुई स्क्रॉटम की। मेरे ख्याल से स्क्रॉटम के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए टेम्परेचर of testis which is 2.2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature, that is scrotum. Name the muscles, that is dartos and cremaster. Name the muscles fiber which attach the testis to the scrotum, that is gubernaculum. Testis is divided into two scrotal set internally by the septa, but this division is marked externally and it is known as raphe. It acts as a thermoregulator. क्लियर? यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है अबाउट द स्क्रॉटम। अब हम बात करते हैं अबाउट द टेस्टिस।